day guys, welcome again to the lectures of Pharmacology by MKB, yeah that's me Dr. Mangesh Tripathi. So guys, आज के लेक्चर में हम लोग अपने एंडोक्राइन का ही नेक्स्ट पार्ट कंटिन्यू करेंगे एंड द टॉपिक व्हिच वी विल कंटिन्यू इज द फीमेल सेक्स हार्मोन. Mainly the sex hormone guys, ओवरऑल द सेक्स हार्मोन जिसको हमने दो पार्ट में डिवाइड किया है, फीमेल सेक्स हार्मोन जो हम आज के लेक्चर में देखेंगे एंड द मेल सेक्स हार्मोन व्हिच विल सी इन द नेक्स्ट लेक्चर इन द नेक्स्ट वीडियो. सो आज हम लोग देखेंगे द फीमेल सेक्स हार्मोन. एज एवरीवन नोज दैट the ovary which is the primary sex organ in female, it secretes two sex hormones. We have estrogen and progesterone. ठीक है, सो ये हमारा मेन दो फोकस होगा, दैट इज योर टू सेक्स हार्मोन द एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन. नाउ एस्ट्रोजन में हम लोग क्या देखेंगे, द एक्शंस ऑफ एस्ट्रोजन. इसके पहले हम देखेंगे व्हिच आर द नेचुरल एस्ट्रोजन प्रेजेंट इन द बॉडी. सो हमारे टॉपिक का ओवरव्यू विल बी द नेचुरल एस्ट्रोजन व्हिच आर प्रेजेंट इन द बॉडी, द एक्शन ऑफ एस्ट्रोजन, then the drugs which acts or which modifies the receptors of the estrogen, they are called as the SERMs. We have SERD, we have STERs and we have the aromatase inhibitor. ठीक है. Similarly progesterone में हम लोग देखेंगे the natural or we can say the different generations of progesterone, different generations of progesterone. The SPR of the sperm, that is selective progesterone receptor modulator, क्या होता है हम देखेंगे, and functions of sperm, that is SPR. So हमारा ओवरव्यू इस टॉपिक का यही रहने वाला है. So इन्हीं टॉपिक पे we will be focusing today. Okay, so सबसे पहले हम देखेंगे एस्ट्रोजन. एस्ट्रोजन के ये चार मेन थ्री कंपोनेंट्स देखेंगे. So पहला हम जो देखने जा रहे हैं that is which are the natural estrogen present in the body. So आप लोग हेडिंग दे दो एस्ट्रोजन. एस्ट्रोजन में natural estrogen present in the body. Okay guys, so coming to the natural estrogen present in the body. Now we have three types. कितने हैं? Three types. कितने? Three types. Number one is called as estrone. It is even. We have estradiol, E2. We have estriol, E3. Okay. Now guys, we know that in the menopause, after menopause, the female becomes single. ऐसा नहीं माना अकेली हो जाती है, बुढ़ापे में सब अकेले हो जाते हैं. So estrone we can say it is mainly present in post-menopausal age. आप ये post-menopausal age. Okay. Now estradiol वो दो कब रहती है? Diol means 2, the female is 2 when she is in the reproductive age group. So mainly it is present in the reproductive age group. And E3 वो तीन कब होती है? With husband, wife and the child that is mainly in pregnancy. We can say like this. So we can remember like this. Estrone is, ठीक है, so estrone is mainly present in the postmenopausal phase, found in the postmenopausal phase. Estradiol mainly present in the reproductive age group, and estriol is mainly present in the pregnancy. तो ये हमारे तीन मेन नेचुरल एस्ट्रोजन है. अब इन तीन नेचुरल एस्ट्रोजन का क्या फंक्शन होता है बॉडी में वो हम देखेंगे. So give the heading actions of estrogen. Okay, guys. एस्ट्रोजन इट इज गुड फॉर सम फैक्टर्स इन द बॉडी. बहुत अच्छा काम करता है बॉडी में, बट कहीं कहीं किसी ऑर्गन के लिए लॉन्ग टर्म में इट कैन हैव सम इंपैक्ट, बैड इंपैक्ट. सो उसके एक्शन में हम देखेंगे सबसे पहला एक्शन बोन पे देते हैं. सो बोन में क्या करता है, इट डिक्रीजेस द ऑस्टियोक्लास्ट. नाउ गाइस एवरीवन नोज दैट योर बोन इज मेड अप ऑफ द टू सेल्स, द ऑस्टियोब्लास्ट एंड द ऑस्टियोक्लास्ट. ऑस्टियोब्लास्ट बोन के फॉर्मेशन में रिस्पांसिबल है और ऑस्टियोक्लास्ट बोन के डिस्ट्रक्शन या रिसॉर्प्शन में रिस्पांसिबल है, दैट इज ऑस्टियोपोरोसिस कॉज करने में.
So it decreases osteoclast, so we can say it is used in bone formation. ठीक है, हमारा एस्ट्रोजन will be used in bone formation. Second, now coming to the blood. गाइस, हम लोग जो एक्शन देख रहे हैं वो अच्छे एक्शंस पहले देख रहे हैं, भाई कहां पे इट इज वेरी प्रोडक्टिव, इट इज गुड इन द बॉडी. नाउ ब्लड में इंक्रीजेस HDL by LDL रेशियो. गाइस, HDL इज हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन, which हम लोग बोलते हैं उसको गुड कोलेस्ट्रॉल. सो अगर गुड कोलेस्ट्रॉल डिपेंडिंग मतलब अपॉन बैड कोलेस्ट्रॉल का रेशियो ज्यादा है, सो मींस इट इज रिस्पांसिबल फॉर maintaining balance of lipids in blood. ठीक है, सो अच्छी बात है, लिपिड गुड कोलेस्ट्रॉल को प्रॉपर ज्यादा रख रहा है, बैड मतलब दोनों का रेशियो अच्छा रख रहा है ताकि जो ब्लड है उसमें लिपिड प्रोफाइल नॉर्मल रहे. ठीक है, अब खराब इफेक्ट इसके होते हैं. फॉर एग्जांपल इन ब्रेस्ट. So breast में it has a long term exposure अगर so it can increase breast cancer. So estrogen has a risk, it has high risk to increase breast cancer. Now coming to the fourth, endometrium, that is uterus. So it increases endometrial cancer, increases the chances of endometrial cancer. And the last में यहाँ लिख दे रहा हूँ फिर, in liver it increases clotting factor. अगर clotting factor मतलब factor 7, factor 9, factor 10 बढ़ गए, so it can cause increases risk of thromboembolism. समझ गया guys? So these are the main 5 actions of estrogen. पहला, bone में decreases osteoclast, so increases in used in bone formation. Second, blood में maintain रखता है कोलेस्ट्रॉल लेवल को. Third, breast में long term exposure can have breast cancer risk. Endometrium, it can have the risk of endometrial carcinoma. And the last is in liver, it increases clotting factor, thereby it increases risk of thromboembolism. So ये 5 हमारे main actions of estrogen के. So guys, हमारा जो next topic इसी में होगा ना, अब डॉक्टर साइंटिस्ट ने क्या किया, they have modified the receptors कि एस्ट्रोजन कहाँ पे अच्छा काम कर रहा है, कहाँ पे खराब कर रहा है, उस हिसाब से रिसेप्टर मॉडिफाई किए ताकि हम ऐसा ड्रग निकाल सके जो पांचों जगह, 2 जगह तो अच्छा है इधर और इधर, अब ऐसे ड्रग्स भी कुछ आ गए हैं जो बहुत सारी जगह अच्छे हैं, मतलब ब्रेस्ट कैंसर का रिस्क कम कर देंगे, वो एंडोमेट्रियम का रिस्क कम कर देंगे, एंड दे आर नथिंग बट दे आर मॉड्यूलेटर रिसेप्टर्स ऑन द एस्ट्रोजन. सो हमारा नेक्स्ट हेडिंग होगा रिसेप्टर्स मॉडिफाइंग द एक्शंस और ड्रग्स व्हिच मॉडिफाई द एक्शन ऑफ एस्ट्रोजन. गाइस, हेडिंग है ड्रग्स मॉडिफाइंग एस्ट्रोजन रिसेप्टर्स. ठीक है, और उसमें जो सबसे पहला क्लास है, सबसे पहला मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास जो शॉर्ट नोट के लिए आने के बहुत चांसेस होते हैं, एंड दैट क्लास, दैट ग्रुप ऑफ ड्रग इज कॉल्ड SERM. अब SERM का फुल फॉर्म लिख लेना आप लोग, सिलेक्टिव एस्ट्रोजन रिसेप्टर मॉड्यूलेटर. ठीक है, सो सिलेक्टिव एस्ट्रोजन रिसेप्टर मॉड्यूलेटर. तो SERM is the most important class of drug in drugs modifying the estrogen receptors. Now guys, आइडियल एक होता है आइडियल सम. हम बोलते हैं एक आइडियल स्टूडेंट होता है हर क्लास में कि उसके पास सारे मतलब ही इज द बेस्ट, बट ऐसा आइडियली पॉसिबल नहीं है. सिमिलरली आइडियल सम है, इट हैज सम प्रॉपर्टीज, एंड व्हिच आर द प्रॉपर्टी. अगर हम बोन में देखें, सो जैसे एस्ट्रोजन था अच्छा काम कर रहा था, डिक्रीजेस ऑस्टियोब्लास्ट. ठीक है, okay, so it is actually agonist of estrogen at bone. agonist मतलब एस्ट्रोजन जैसा ही काम कर रहा है बोन में. अब ब्लड में क्या करेगा, अगेन इट शुड decrease osteoclast, increase HDL by LDL ratio. So it should maintain the lipid constant lipid profile,
थर्ड, अब ध्यान से देखना, ये दोनों तो सेम एज एस्ट्रोजन है, मतलब इन दोनों की जगह पे हमारा जो आइडियल सम है वो क्या है, अगोनिस्ट टू द एस्ट्रोजन। अब ये तीन जगह पे थर्ड हमारा क्या था, फॉर एग्जांपल ब्रेस्ट। सो आइडियल सम क्या करता है, एस्ट्रोजन क्या करता है, रिस्क बढ़ा रहा है ब्रेस्ट कैंसर का, बट आइडियल सम क्या करेगा, इट इज एंटागोनिस्ट एट ब्रेस्ट। गाइस इट इज एंटागोनिस्ट एट breast, so it will decrease cancer breast, it will decrease the risk of carcinoma breast, okay। अब फोर्थ endometrium, हमारा एस्ट्रोजन क्या कर रहा है वहां पे भी, it was also increasing the risk of endometrial cancer। अब यहाँ पे अगेन क्या होगा, antagonist ideal sum, so it should be antagonist at endometrium, so यहाँ पे भी वो क्या करेगा, it should decrease endometrial carcinoma risk, ठीक है। and the last, that is the fifth, in liver, again it is antagonist of estrogen, so it will decrease risk of क्या, thromboembolism, correct है guys, okay। so this is guys ideal sum। देखो sum शॉर्ट नोट बहुत बार आ चुका है, तो आइडियल सम वही होता है जो पांच जगह हर जगह अच्छा काम है, but there is no ideal sum as such, but there is one which is the closest ideal sum, and the closest sum अब तो यहाँ लिख सकते हो the closest sum to the ideal, and the drug is reloxifene। क्या है guys, reloxifene। reloxifene का आप लोग बस ये मैं आप बता दे रहा हूँ, reloxifene यहाँ पे अच्छा है, बोन में अच्छा है, डिक्रीजेस ऑस्टियोक्लास्ट, सो इट इज यूज्ड इन ऑस्टियोपोरोसिस। सेकंड जगह ब्लड में भी अच्छा है। थर्ड ब्रेस्ट में, यस ब्रेस्ट में भी अच्छा है, इट इज एंटागोनिस्ट एट ब्रेस्ट द एस्ट्रोजन, सो वहां पे ब्रेस्ट कार्सिनोमा का रिस्क कम कर रहा है। एंडोमेट्रियम में भी सेम एंटागोनिस्ट एट एंडोमेट्रियम, तो एंडोमेट्रियम का कार्सिनोमा भी अच्छा कर रहा है। तो चार जगह वो अच्छा है, दो जगह अगोनिस्ट है एस्ट्रोजन का और दो जगह एंटागोनिस्ट है, बट पांचवी जगह इन लीवर उसका एक प्रॉब्लम हो जाता है, इट इज agonist at liver, so like estrogen it also increases thromboembolism risk। तो हर जगह वो अच्छा है, बट इस लिवर में वो हो जाता है agonist एंटागोनिस्ट की जगह पे। अंडरस्टूड गाइस, रिलॉक्सिफेन इज द क्लोजेस्ट सम, ठीक है। ओके, अब हम लोग और सम्स देखेंगे, कौन से और सम्स होते हैं। हमने फुल फॉर्म देख लिया है, सिलेक्टिव एस्ट्रोजन रिसेप्टर मॉड्यूलेटर। अब ये सम्स कैसे होते हैं, नाउ इफ यू रिमेंबर द सम, जस्ट रिमेंबर द निमोनिक डॉक्टर। क्या है निमोनिक डॉक्टर? सो एलॉक्सीफेन और मेलॉक्सीफेन, this stands for clomifene, T for tamoxifen and toramifene, O for ospemifene, and R हमने अभी देखा the closest ideal sum is reloxifene। So guys, डॉक्टर अगर आपको याद है means you remember this sum। देखो guys, निमोनिक प्लेज अ क्रूशियल रोल, है ना। ड्रग्स फार्मा बहुत वोलेटाइल है, इसलिए आपको निमोनिक के भरोसे रहना ही पड़ेगा, उसके लिए आपको रिवाइज द निमोनिक्स। सो सर्म इज द डॉक्टर, सो ये हमारे सर्म्स हैं। अब हमने रिलॉक्सीफेन के बारे में तो देख लिया, ठीक है। अब देयर आर सम व्हिच हैज 3, वो 3 बी पे अच्छे हैं। पहला बी बोन, सो यूज्ड इन ऑस्टियोपोरोसिस। दूसरा बी इज ब्लड, so like estrogen again it increases HDL by LDL ratio, and the third is breast, it decreases breast cancer। so ऐसे कौन से गाइस सम हैं जो दो जगह तो एस्ट्रोजन जैसे अच्छे हैं, बट ब्रेस्ट में एस्ट्रोजन वी नो इज अगोनिस्ट, वो
वहां पे ब्रेस्ट कैंसर करता है, पर कुछ सर्म है जो ब्रेस्ट कैंसर को डिक्रीज करेंगे। एक तो रिलॉक्सिफेन है, बट रिलॉक्सिफेन तो चौथी जगह भी अच्छा है, यूट्रस में भी वो कैंसर को कम करता है, बट ये जो सर्म है वो यूट्रस में कैंसर बढ़ाते हैं, एंड लास्ट इज लिवर में थ्रोम्बोएम्बोलिज्म भी बढ़ाते हैं। सो 3 B's में वो अच्छा है, एंड that sum is epoxyfen or ardifen, and we have naloxone. So guys, ये 3 सम हमारे जो है हम बोल सकते हैं DT स्क्वायर, डिस्पर्सिबल टैबलेट, या याद रख सकते हैं these 3 sums are agonistat bone, agonistat blood, but antagonist of estrogen at breast. तो यहाँ पे ये ब्रेस्ट कैंसर को कम करता है, and we can say this is the first line drug, the tamoxifen. इसमें the tamoxifen is the first line drug in breast cancer. Please remember the oral tablet अगर हम देखें, it is one of the first line drugs in breast cancer. It is used. Okay guys. Now guys, one more thing. There is one clomiphene. Now clomiphene का एक बहुत important point है. Just remember, उसके लिए आपको पता होना चाहिए एक hormones. You know hypothalamus is a master endocrine gland. Now hypothalamus related to hormone, gonadal hormone क्या रिलीज करता है? GnRH. That everyone knows. Now hypothalamus किसको stimulate करता है? Pituitary को. Now pituitary releases the FSH and LH. Now this pituitary in turn will stimulate the ovary, which releases estrogen and progesterone. Okay. Now this clomiphene ना guys, अब ध्यान सुनना. Mostly normally क्या होता है? When there is excess of estrogen, अगर estrogen बढ़ गया है, so what happens? There is a negative feedback. Negative feedback जाता है किसको? To the pituitary. Pituitary की भाई डिक्री आप बंद करो, रिलीज करना FSH, which will stimulate the ovary to release estrogen. अब हमको नहीं चाहिए, so there is a negative feedback, so estrogen क्या हो जाता है? कम हो जाता है secrete होना. Understood? Normally, naturally होता है negative feedback में. अब हमारा clomiphene है ना guys, clomiphene is actually it is an antagonist. It is an antagonist of estrogen in pituitary. इसका मतलब क्या होता है? ठीक है, अब ध्यान सुनना. नेगेटिव फीडबैक में मोस्टली क्या होता है? एस्ट्रोजन जाता है, एस्ट्रोजन ज्यादा का रिलीज हो गया, so it will stimulate the ovary, which will stimulate the pituitary to decrease the release of FSH. That is in turn it will decrease the release of FSH, and in turn it will decrease the release of estrogen. अब हमारा since ये drug clomiphene is an antagonist of estrogen in pituitary, so negative feedback जाने के बाद भी, नेगेटिव फीडबैक जाएगा तो भी क्या नहीं होगा, ये इसका रिलीज क्या होगा? बढ़ता जाएगा, और मोस्टली LH का रिलीज को बढ़ा देता है. कौन? हमारा क्लोमिफेन. ठीक है, सबको समझ रहा है? देखो आइडियली नॉर्मली क्या होता है? देयर इज अ नेगेटिव फीडबैक. अगर एस्ट्रोजन ज्यादा है, सो इट विल स्टिमुलेट द पिट्यूटरी टू रिलीज द डिक्रीज FSH एंड LH. उसको कम कर देगा ताकि एस्ट्रोजन कम सीक्रेट. ठीक है, अब यार ये मैंने ड्रग दे दिया क्लोमिफेन इन सम कंडीशन. अब कौन सी कंडीशन देखेंगे? क्लोमिफेन क्या है गाइस? इट इज द एंटागोनिस्ट ऑफ एस्ट्रोजन इन पिट्यूटरी. सो एस्ट्रोजन कितना भी अब स्टिमुलेट करे कि भैया मुझे कम करो, मतलब FSH LH के रिलीज को वो नहीं कम हुआ, बिकॉज़ इट इज एंटागोनिस्ट. सो क्लोमिफेन मोस्टली रिलीजेस LH. उसका मेन काम है टू इंक्रीज LH, और LH क्या करने के लिए रिस्पांसिबल है गाइस? और ओव्यूलेशन. LH सर्ज अगर हो गया मींस ओव्यूलेशन हो गया, ओवम रिलीज हो गया फ्रॉम द सेकेंडरी मींस ओवरी, एंड द फर्टिलाइजेशन will occur. This is normal process. ठीक है, if there is sexual intercourse on the same day for 13th-14th day, and there is fertilization occurs and zygote form होगा. ठीक है, अब in some patients जिनमें ओव्यूलेशन इंड्यूस नहीं हो पाता है naturally, so we have to give the clomiphene, and that condition in which there is absence of ovulation is an ovulatory infertility. So guys, please remember clomiphene is given in which condition? In
and ovulatory infertility. क्यों नहीं, क्या हो रहा है इसमें? देयर इज LH डिक्रीज है, ओवम निकल नहीं रहा है फ्रॉम द ओवरी, सो देयर इज नो फर्टिलाइजेशन, प्रेगनेंसी होगी नहीं, सो इनफर्टिलिटी रहेगी. ठीक है, सो दिस इज वन ऑफ द फेवरेट we can say indications of clomifene, that is in an ovulatory infertility. but इसका साइड इफेक्ट क्या होगा इस कंडीशन का कि भाई LH इतना ज्यादा वो स्टिमुलेट कर देता है कि कभी-कभी ना 2-3 डबल प्रेगनेंसी, ट्रिपल प्रेगनेंसी हो सकती है, so it can have multiple pregnancies. So this is one of the side effect of clomifene, guys, you should know. सबको समझ गया clomifene? So clomifene is a antagonist of estrogen in pituitary. So normal feedback में estrogen अगर बोलता है कि अब कम करो रिलीज करना LH FSH को, अगर ज्यादा सीक्रेट हो गया तो पिट्यूटरी उसको कम कर देगा FSH LH को. बट अगर मैंने ये ड्रग दे दिया, so since it is the antagonist, so estrogen के बोलने के बाद भी हमारा LH और FSH इंक्रीज होगा, और मेनली ओव्यूलेशन में हमें LH ज्यादा चाहिए और ओव्यूलेशन, so हमारा क्लोमिफेन is used in an ovulatory infertility, but it has a side effect of multiple pregnancy. सबको इतना समझ गया guys? There is one of the most important SERM, and that is ormeloxifene. Now ormeloxifene, guys, it is the antagonist of estrogen at endometrium. Please remember, this is one of, it is antagonist of estrogen at endometrium. अब इस यूज को, इसके इस एक्शन को हम लोग कहाँ यूज कर सकते हैं? ठीक है, इन कॉन्ट्रासेप्शन. इन कॉन्ट्रासेप्शन, प्लीज रिमेंबर गाइस, इन कॉन्ट्रासेप्शन हम लोग इसके एक्शन को यूज कर सकते हैं. कैसे? बिकॉज ormeloxifene is a non-steroidal contraceptive pill. It is a non-steroidal contraceptive pill. कैसे लेते हैं? The dose is 30 mg. इसके टैबलेट आते हैं, और जो टैबलेट का ब्रांड नेम है, it is Centproman. और आजकल जिस नाम से वो बिकता है फ्री ऑफ कॉस्ट टू दी फीमेल्स, उसका नाम है सहेली. आपने सुना होगा गाइस? यस, सहेली एंड छाया. So this is, so Chaya and Saheli is one of the very common sarkari name of this drug, which is King Saheli, is free of cost, given in government setup for the use as a contraception in female. अब ये लेना कैसे है guys? इसका याद रखना. This ormeloxifene is taken twice a week for 3 months, followed by once a week till contraception needed. इसका मतलब पहले 3 महीने आपको हफ्ते में 2 दिन लेना है, उसके बाद वंस अ वीक लेना, जब तक फीमेल को कॉन्ट्रासेप्शन चाहिए, जब तक उसको प्रेगनेंसी प्रिवेंट करनी है. एंड इट इज वेरी सक्सेस ड्रग. एंड दिस ड्रग एक्चुअली, इसका एक खास बात गाइस, इट इज मैन्युफैक्चर्ड इन इंडिया, वहीं से डेवलप हुआ है. एंड द अथॉरिटी हु हैज डेवलप्ड इज CDRI लखनऊ. लिख लेना ये सब. CDRI सेंट्रल ड्रग्स रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ. सेंट्रल ड्रग रिसर्च Institute Lucknow has developed ormeloxifene, that is Centproman, which is also called Saheli and Chaya. The dose is 30 mg oral tablet. This is very important. अब उसका एक्शन क्या है? It is an antagonist of estrogen at endometrium, और endometrium में क्या होता है? Implantation होता है. तो हमारा ड्रग क्या करेगा? उसी को प्रिवेंट कर देगा, so contraception will be there. Understood now? ठीक है? Okay, so this is guys all about the SERM, the first modulator or the drugs which modify the estrogen receptor. अब हम लोग 3 बचे हैं, बहुत छोटे हैं, उसको फटाफट देख लेते हैं. Okay guys, so coming to the second drugs which modify the estrogen receptor, that is SERD, selective estrogen receptor डाउन रेगुलेटर. मतलब ये estrogen के रिसेप्टर को डिक्रीज करेगा, और अगर estrogen के रिसेप्टर को डिक्रीज करेगा, so one of the indication जहां पे estrogen के रिसेप्टर को कम चाहिए is breast cancer.
So these drugs are actually used in breast cancer. Now guys, हमने अभी लास्ट में देखा था the first line drug for breast cancer is tamoxifen. So अब ये drug कहाँ यूज कर सकते हैं? This drug is used in tamoxifen resistant breast cancer. जहाँ पे tamoxifen हम यूज नहीं कर सकते वहाँ पे ये drug हम लोग यूज करेंगे because it is decreasing the receptor. वो वहां क्या कर रहा है? इट इज मॉडिफाइंग द रिसेप्टर, तो ये ज्यादा इफेक्टिव होगा। ठीक है, हम लोग ये लिख लेंगे अभी, इट इज मोर इफेक्टिव, गुड सेफ्टी एंड लॉन्गर एक्टिंग। दिस इज एडवांटेज ऑफ दिस ड्रग बिकॉज इट डिक्रीजेस एस्ट्रोजन रिसेप्टर। ठीक है, and used in tamoxifen resistant breast cancer. And the drugs are, there are two drugs. First is fulvestrant and elacestrant. ठीक है, Now this is injectable drug. Please remember. यार तो फुल बायोअवेलेबिलिटी किसकी होती है? इंजेक्शन की। ओरल की तो होती नहीं है, सो ई इज एक्चुअली ओरल। ठीक है, फुल इंजेक्टेबल, फुल बायोअवेलेबिलिटी के हिसाब से याद रखो, फुल एब्जॉर्प्शन इंजेक्टेबल। सो fulvestrant is your injectable while elacestrant is oral. ठीक है, understood? So this is guys all about the third, अब हम लोग थर्ड पे आएंगे, that is steer. थर्ड आप लोग लिख लो steer. Steer का फुल फॉर्म राइट डाउन, selective tissue estrogen activity regulator. नाम में मीनिंग है इसके। देखो SERM में था भाई कुछ मॉडिफिकेशन है, यहाँ पे है that it decreases estrogen receptor, यहाँ पे selective tissue estrogen activity regulator। मतलब ये बोलना चाहता है किसी टिश्यू के लिए ये जो ड्रग है वो किसी टिश्यू में अगोनिस्ट होगा, मेटाबोलाइज होके, किसी टिश्यू में वो एस्ट्रोजन का एंटागोनिस्ट होगा। सो हमारा जो मेन काम होना चाहिए जहां पर अच्छा यूज हो उसका, वो हमें देखना है, उस ड्रग को देखना है, उस यूज को देखना है। एंड द ड्रग which is included in steer is called as a tibolone. क्या नाम है गाइस? tibolone, जिसका दूसरा नाम है डिजाइनर हार्मोनल रिप्लेसमेंट थेरेपी, HRT। फुल फॉर्म लिख लेना, tibolone is designer hormonal replacement therapy बिकॉज़ कुछ टिश्यू में मेटाबोलाइज होके अगोनिस्ट फॉर्म करता है, कुछ टिश्यू में वो मेटाबोलाइज होके एंटागोनिस्ट एस्ट्रोजन फॉर्म करता है। अब इसके कौन से यूज होंगे जो हमें इंपॉर्टेंट है, जो हम लोग यूज करते हैं, वो हमें लिखना है। इट फॉर्म्स, ये जो हमारा tibolone है ना, it is agonist at vagina like your estrogen, so it decreases vaginal atrophy. Second, it is agonist at blood vessel, it decreases vasomotor symptom। क्या होता है पोस्ट मेनोपॉजल एज में, ठीक है, एस्ट्रोजन कम हो जाता है ना, हॉट फ्लशेस बहुत होते हैं, रेडनेस, अचानक घबराहट होना, एंजाइटी होना, ये पोस्ट मेनोपॉजल का सिम्टम है बिकॉज़ ऑफ डिक्रीज एस्ट्रोजन। तो हमारी ये जो ड्रग है tibolone, इट इज अगोनिस्ट लाइक एस्ट्रोजन, सो ब्लड वेसल में विल डिक्रीज द vasomotor symptom। तो व्हाट vasomotor symptoms आर एक्चुअली द हॉट फ्लशेस। ओके, the last it is also agonist at bone, so it is used in osteoporosis। so ये ड्रग तीन जगह agonist है like estrogen, vagina, blood vessel and bone। understood guys? okay, now coming to the last drugs which modify the estrogen receptor is the aromatase inhibitor। okay guys, so we are coming to the last drug which modify the estrogen receptor and that is the aromatase inhibitor। so what is aromatase inhibitor guys? you know adrenal gland, adrenal gland releases androgens, sex corticoids, which is converted to estrogen
एंड एस्ट्रोजन के कन्वर्शन के लिए वी नीड एरोमेटेज। अब हम लोग एरोमेटेज इनहिबिटर अगर देखेंगे तो क्या होगा, ये स्टेप मतलब एस्ट्रोजन फॉर्म ही नहीं होगा। एंड द drugs which are aromatase inhibitor, how to remember, just remember the mnemonic VELA, है ना, VELA बैठा है। so V stands for vorozole, E थोड़ा अलग नाम है exemstane, L for letrozole and A for anastrozole। so VELA is your aromatase inhibitor, okay guys, so VELA is your aromatase inhibitor, ये आपका mnemonic है for aromatase inhibitor। अब ये यूज कहां होता है ना गाइस, एक चीज आप लोगों को याद रखना है, इसका जो इंडिकेशन होगा इस एरोमेटेज इनहिबिटर का, अब ये एस्ट्रोजन को फॉर्म होने से बचाता है, मतलब ज्यादा उसकी क्वांटिटी को कम करेगा, एस्ट्रोजन में कन्वर्जन ही नहीं होने देगा। अब ये कौन से कंडीशन में ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इट इज यूज्ड इन पोस्ट मेनोपॉजल ब्रेस्ट कैंसर। ठीक है, मेनली यूज्ड इन पोस्ट मेनोपॉजल ब्रेस्ट कैंसर, बिकॉज नेचुरली देखो मेनोपॉज के पहले तो भाई ऑलरेडी रिलीज हो रहा है एस्ट्रोजन बहुत ज्यादा है, उसको टेक केयर करने के लिए दूसरे लोग हैं, बट आफ्टर द मेनोपॉज एस्ट्रोजन ऑलरेडी कम हो गया है और देयर आर सम अदर टिश्यू जो एस्ट्रोजन रिलीज करते हैं, उन टिश्यू वो क्या करते हैं जाके, इट विल इंक्रीज द ब्रेस्ट कैंसर। अब हमारा जो ड्रग है दैट इज एरोमेटेज इनहिबिटर, इट विल डिक्रीज दैट एस्ट्रोजन जो बाहर से अदर देन ओवरी से सिक्रीट हो रहा है, बिकॉज़ ओवरी में तो रह ही नहीं गया, पोस्ट मेनोपॉज हो गया, सो इट विल डिक्रीज द कैंसर। सो इट इज मेनली यूज्ड इन पोस्ट मेनोपॉजल ब्रेस्ट कैंसर। बिकॉज़ अगर रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप में कैंसर हो रहा है तो कौन है वहां यूज होने के लिए, टैमॉक्सिफेन है। So reproductive age group में we do not have to give this drug. This drug is only given in post-menopausal breast cancer. This you should remember. And one more thing, estrogen कम हो रहा है, estrogen का ध्यान सुनो कम कर रहा है, और एक कंडीशन अगर आपको याद होगी क्लोमिफेन का ओव्यूलेशन करना, सिमिलरली हमारा एरोमेटेज इनहिबिटर भी क्या करेगा, estrogen को ऑलरेडी कम रखेगा, so it can be used in ovulation mainly in PCOD. It is a drug of choice nowadays for the ovulation in polycystic ovarian disease. ठीक है, समझ गया। तो हमारा दो मेन कंडीशन है जहां पे यूज होगा एरोमेटेज इनहिबिटर, पहला पोस्ट मेनोपॉजल ब्रेस्ट कैंसर, सेकंड फॉर द ओव्यूलेशन इंडक्शन इन PCOD, it is one of the drug of choice now. ठीक है, so these are the two indication and these are the four aromatase inhibitor, that is VELA. So this is all about guys estrogen, that is the first sex hormone. अब हम लोग मूव करेंगे प्रोजेस्टेरोन पे, जो इंपॉर्टेंट है बट बहुत छोटा सा है, अच्छा है, ओके। ये तो हेडिंग गाइस प्रोजेस्टेरोन, ओके गाइस। सो द लास्ट सेक्स हार्मोन and the drugs modifying the receptor of progesterone we should know. So progesterone, it is the female sex hormone which is also called as the pregnancy hormone, we already say, ठीक है, उनको पता है, ओके। नाउ प्रोजेस्टेरोन के अगर जनरेशंस देखें, मेनली हम लोग उसके जनरेशन पे फोकस करेंगे। सो जनरेशन ऑफ प्रोजेस्टेरोन, देयर आर 4 जनरेशन, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। अब जैसे जैसे जनरेशन पे जाएंगे है ना, पोटेंसी बढ़ेगी। सो प्लीज रिमेंबर, दिस इज लेस पोटेंट, दिस इज मोर पोटेंट, दिस इज थोड़ा ज्यादा है, दिस इज most potent rather. Fourth generation is most potent, but there is one more activity related to your progesterone, that is androgenic activity. It is also related with the testosterone activity. First generation will also stimulate the male sex hormone. So जैसे जैसे नीचे जाएंगे वैसे वैसे एक्टिविटी कम होगी, बढ़ेगी नहीं। एंड्रोजेनिक एक्टिविटी सबसे ज्यादा होती है फर्स्ट और फोर्थ जनरेशन में, उससे कम होगी सेकंड में, उससे कम होगी थर्ड में। अब हमारा फोर्थ उसमें जीरो नहीं होगा, उसमें एंटी एंड्रोजेनिक एक्टिविटी हो जाएगी, एंटी एंड्रोजेनिक एक्टिविटी। ऑल्सो इट हैज एंटी मिनरलोकॉर्टिकॉइड एक्टिविटी। Understood guys? So we have 4 generation of progesterone, first, second, third, fourth. Potency will increase as we go from first to fourth, but the androgenic activity will decrease. So पहले का सबसे ज्यादा androgenic activity होगी, but last वाला तो anti androgenic होगा, also it is anti mineralocorticoid
सेकंड में कौन से, थर्ड में कौन से, फोर्थ में कौन से. Now first generation progesterone, नाम बताना चाहिए आपको, norethindrone and norethindrel. So this is first, so one, just remember like that. यहाँ बस एक दो स्टेप का डिफरेंस है, वन से ये आ गया. अब सेकेंड आपको पता होना चाहिए norgestrel and levonorgestrel. इसका शॉर्ट फॉर्म है LNG. इस थर्ड आपको पता होना चाहिए desogestrel and norgestimate. And the last is fourth, we have drospirenone. Okay guys, so these are the four generation of progesterone. First is norethindrone, norethindrel. Second is norgestrel, levonorgestrel. Third is desogestrel and norgestimate, and the last is drospirenone. So these are the four generations of progesterone. Okay, अब हम लोगों को पता होना चाहिए guys, progesterone के अगर रिसेप्टर हम लोग को मॉडिफाई करें, उसके एक्शंस को अलग-अलग जगह पे, so the drug which is formed like sometime जो एस्ट्रोजन के रिसेप्टर को मॉडिफाई कर रहा है, वैसे we have the drug which modify the progesterone receptor and they are called SPRM. SPRM. Heading below SPRM. SPRM. Now we have three drugs. The first is guys called as mifepristone. Second is onapristone. The last is ulipristal. So guys, इतना आपको याद रखना है स्कोप में, that is MOU. ठीक है, MOU is to remember this form. अब now mifepristone guys, just remember it is antagonist of progesterone at endometrium. Second, it is having हम लोग ने देखा था glucocorticoid activity. Also it has anti-mineralocorticoid activity. But onapristone और ये this two are only antagonist. It is only antagonist of progesterone at endometrium. को पता होना चाहिए. ओके, सो हमारा पहला mifepristone भाई एंटागोनिस्ट ऑफ प्रोजेस्टेरोन में तो है ही, एंडोमेट्रियम को एंटी ग्लूकोकॉर्टिकॉइड एक्टिविटी दी, एंटी मिनरलोकॉर्टिकॉइड दी. ठीक है, ओनाप्रिस्टोन और यूलिप्रिस्टल एक जगह एंटागोनिस्ट हैं हमारे एंडोमेट्रियम के, मतलब प्रोजेस्टेरोन के, दैट इज एट एंडोमेट्रियम. ठीक है, ये यही एक्शन है गाइस, उसका यूज बन जाता है. सो अब हम हेडिंग देते हैं यूजेस ऑफ mifepristone. यूजेस ऑफ mifepristone. Now guys, just remember by a mnemonic, the uses can be remembered by mnemonic cafe. So C stands for guys, it is the contraceptive. It has a contraceptive use. It is used as emergency contraceptive pill. That is warning after pills बोलते हैं, मतलब in the unprotected sexual intercourse we have to use mifepristone tablet. ठीक है, that is called contraceptive use, emergency contraceptive pill. So this is first. Now second guys, now हमने देखा था guys mifepristone is also a glucocorticoid का antagonist. So अगर glucocorticoid ज्यादा secrete हो गया है तो क्या हो सकता है, Cushing's disease, Cushing syndrome. So it is used in Cushing's disease. Okay guys, so one more use of mifepristone, it is used in cancer associated with progesterone. That is like breast cancer and meningioma. जहां पे इसका रोल हमें दिखेगा कैंसर फॉर्म, मतलब प्रोजेस्टेरोन पॉजिटिव रिसेप्टर है और वहां पे ब्रेस्ट और मेनिंजियोमा बढ़ने की चांसेस है, वहां पे कहिए mifepristone. ठीक है ना. सेकंड यूज, इट इज यूज्ड इन इंडक्शन ऑफ एबॉर्शन. ए मतलब एबॉर्शन, इट इज यूज्ड इन इंडक्शन ऑफ एबॉर्शन.
can be induced by this drug. F is it is used in fibroid. The last stage is used in endometriosis. So guys, if you remember the mnemonic cafe, you remember the uses of mifepristone. So C means there are 3 C. It is used in contraceptive. It is emergency contraceptive pills, Cushing's disease, and it is used in cancer associated with progesterone positive. That is breast cancer, meningioma. Second, induction of abortion. Third is fibroid. E for endometriosis. ठीक है? अब हम लोग बच्चे के दो हमारा ओनाप्रिस्टोल एंड यूरिप्रिस्टोल का एक ही यूज देखते हैं. Uses of ओनाप्रिस्टोल. ऐसे हमने देखा था, it is only endometrium. It is an antagonist of progesterone at endometrium. जिसका एक ही यूज है, it is used in induction of abortion. So one of the same use as mifepristone, it is used in induction of abortion. अब हमारा third last है uses of ulipristal. Guys, so we will see the last thing, that is uses of ulipristal. अब guys, ulipristal का एक खास यूज है, that is इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्शन. हमने अभी देखा था. ये क्या होता है? अगर गाइस देयर इज अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स, सो विद इन 72 आवर्स बहुत बार हम कुछ टैबलेट लेते हैं जिसमें मिफेप्रिस्टोन है. वी हैव अदर टैबलेट्स आल्सो, वी हैव कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स आल्सो. वो विद इन 72 आवर्स लेना है. अगर आप भूल गए भाई हमने कॉन्डोम यूज नहीं किया, फीमेल ने कॉन्ट्रासेप्शन के कोई टैबलेट यूज नहीं किए, एंड दे रिमेंबर अरे यार हमने यूज नहीं किया, सो विद इन 72 आवर्स they can take mifepristone or contraceptive pills that pregnancy is prevented. but अगर 3 दिन से ज्यादा हो जाता है तब कौन सी टैबलेट लेते हैं? ये आपको जादू का काम करता है. so ulipristal is used, please remember, it is used within 5 days. It can be used within 5 days of unprotected sexual intercourse. This is very good point about ulipristal. It can be used within 5 days. Within 5 days means 120 hours. 5 दिन तक unprotected intercourse के we can use ulipristal tablet. Understood? वो भी single dose. Please remember, single dose of ulipristal can be used within 5 days of unprotected intercourse. So ulipristal dose is 30 mg single dose. This is all about your female sex hormone. ठीक है? I hope you have understood this topic. Now in the next lecture guys we will start with the male sex hormone. Next week that lecture will also be uploaded. ठीक है? So this is all about guys of the female sex hormone. We'll meet in the next lecture with the male sex hormone. तब तक please guys keep learning, keep enjoying, and please like, share and subscribe Pharmacology by NKT. Thank you so much.